Hello everyone, good evening, welcome to the session. This is Priyasha from CrackZat, and in this session we will be taking up first one RC. We'll do the analysis, how to approach the RC, how to solve it, and the second part of this would be a small part where we'll be covering few questions on error detection. Now, the major agenda to understand here in these live sessions is that you have to understand the approach. We are not here to see whether you are giving the right answer or the wrong answer. Hi Ray, welcome to the session. Hello Zishan. Hi Prakash, welcome to the session. We are primarily here for understanding the approach. When I discuss things with you in the chat, I am aiming for a holistic discussion. So see, the only reason why you are doing this live, I could have recorded it at any hour and would have left it on YouTube. Must be definitely better for me, but then I'm coming live because I want to clear the concepts with discussing things with you. Hi Shivam, hello BM, hi Shine, welcome to this session. So please use and utilize these sessions accordingly. Okay, appreciate these sessions in that way that you are understanding the things by the process, not only by the correct answer or the wrong answer. Don't judge your practice questions by how many you went right and how many you went wrong in. The only benefit of joining this in the live session today would be that you are a part of this discussion. Why this? Why not this kind of a thing? Hi Swapnil, hello Aniket, welcome to the session. So we'll start off with the RC first. I have shared the RC already in the Telegram group. So if you have not checked it out, no problem. And if you want to check it out simultaneously with me right now when I am doing it on the screen right now, you want to open it on a different tab, you can definitely go back to the Telegram group and from there you can download the PDF. Okay, I've shared the PDF with you people. Hi Farik, welcome to the session. So let's get started with our RC. Fast normal approach लेंगे जैसे हर एक student लेता है. I am doing good. Abhishek, how are you? And please ध्यान में रहे, RCs are nothing but small case studies, and case studies are something which you will have to do throughout your MBA as well as in your work area, because work area में case studies की जगह real life problems आएंगी. So you will have to keep studying and referring to the old scenario. एक common sense लगा कर देखो, आप किसी भी डोमेन में अगर अभी करंटली काम कर रहे हो या किसी भी डोमेन में काम करने का सोच रहे हो, so how would you get better at your work? Of course, by rectifying the mistakes which you did earlier, plus by preventing yourself from doing the mistakes which people did earlier. That is the major purpose of research, that is the major purpose of case studies, that is the major purpose of reading comprehensions as well. ओके, हाय रिद्धि, वेलकम टू दिस सेशन. सो इस अप्रोच से पढ़ाई करेंगे ताकि हम सब कुछ अच्छे से समझ पाए. लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट पैराग्राफ एवरीवन. I'll read and I'll highlight what to understand from these lines. A case can be made that both the systems means we are going to talk about two systems, justice and status, began to evolve in the early primates from different aspects of their life. Okay, this we understand. Both began within families, तो दोनों ने अपनी starting family से की, but in the primates before the man's evolution, the status system developed independently of the justice system. Yes, Abhishek, you are right. You have to develop the logical approach. Hi, Kushi. Welcome to the session. So, we understood one point of difference, that is, in the case of primates, before the man came into being, they were actually the status system developed independently of the justice system. Suppose करो आपको ये line समझ में नहीं आया. Have some patience. Read through the next line. देखो next line में कोई help मिल रही है हमें या नहीं मिल रही है? It है तो definitely help मिलेगी क्योंकि it's a description. It has worked itself into the instincts and the hormonal economy of the primate brain to such an extent that the level of serotonin is a hormone, you might not know about it, it's totally fine, it's just a proper noun for you now.
in an animal's brain is almost an indicator of animal's social status. यानी मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि कैसे inside our own body we have those hormones which resemble or which help us to think in such a way that I connect myself to a social status. In man's evolution, the justice system has been playing catch up and is fusing once again with the more deeply ingrained status system. Okay, so अभी तक हम लोग continuously एक system के बारे में बात कर रहे हैं. Can you guys tell me which system are we talking about? ईशान, welcome to the session. रीडिंग की हैबिट नहीं है रे, तो वो हैबिट डालनी पड़ेगी, ये तो काफी ऑब्वियस सा आंसर है. एंड उसके लिए सबसे अच्छा सोर्स टू गेट स्टार्टेड इज द एडिटोरियल. जस्टिस, हाँ जिशान, जस्टिस और स्टेटस, विच सिस्टम? बीएम, नॉट इंडिपेंडेंस? नो, वी आर टॉकिंग अबाउट जस्टिस सिस्टम ओनली इन दिस लाइन. जिशान देखो, we are saying just status system developed independently of justice system, यानी justice system एक अलग चीज है, status system एक अलग चीज है. and throughout these many lines जो हमने अभी तक पढ़ लिया, we are only concentrating upon status. please see, पहले मैंने status को justice से अलग किया, फिर मैंने बताया कि कैसे हॉर्मोन्स के हेल्प से एनिमल्स अपने दिमाग के अंदर एक सोशल स्टेटस बनाते हैं. सो द वर्ड स्टेटस. उसके बाद हमने एवोल्यूशन के बाद की कहानी बताई, जहाँ पे फिर से स्टेटस सिस्टम की हम बात कर रहे हैं. करेक्ट. फिर हमने आगे बढ़े, जस्टिस इज अप्लाइड नो लॉन्गर ओनली टू द एग्रीमेंट बिटवीन. ओके, यहाँ तक तो हम पहुंचे ही नहीं थे. ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ा था डीपली इनग्रेन्ड इन द स्टेटस सिस्टम. So till now we are talking about status system. Why did I give you this reality check? Any idea? मैं आपको इसी वक्त रोक कर ये समझाना चाहती हूँ कि आप अपने आप को 2 लाइन पीछे ले जाकर समझाओ कि अब तक आप जो बात कर रहे थे वो किसके बारे में कर रहे थे. क्योंकि जब भी जनरली whenever we have a comparison based RC, हमारा दिमाग सिर्फ कीवर्ड्स खोजता है. तो जैसे ही सपोज करो जिशान को जस्टिस कीवर्ड दिखा, उसे लगा कि हम जस्टिस की बात कर रहे हैं, बट इट्स नॉट सो. इसीलिए जब भी आपको लगे कि आप स्विंग में नहीं चल रहे हो, आप फ्लो आपका टूट रहा है, या यू आर लूजिंग कंट्रोल ओवर व्हाट यू आर रीडिंग, गो बैक 1 स्टेप. जैसे वो हिंदी में आपने सुना होगा ना कि शेर 2 कदम पीछे लेके फिर छलांग मारता है. तो आपको भी वही करना है. जहां आपको लगा कि आप ट्रैक लूज कर रहे हो, जस्ट गो 1 सेंटेंस बैक एंड रीड अगेन, बट डू नॉट कम बैक ऑल ओवर अगेन. उससे बेटर है कि यू डू दिस प्रैक्टिस इन द पैराग्राफ इटसेल्फ. दैट्स लेस टाइम टेकिंग. Okay, so till now we were only talking about what? Social status. Alright, now we will come down to justice system. Justice system has been playing catch up and is fusing once again more deeply ingrained status system के साथ. तो we are connecting the links now. कैसे justice system status system से connected है. Now think about this one. What's written over here? Just as the antecedents of the two systems were fused in the early primate families, उसी तरह से ये justice system से status system के अंदर घुस रहा है. Now look over here. In particular, justice is applied no longer only to the agreements between people to reciprocate favor, as in contracts. It has acquired quite different role of rule setter and umpire for the games of status seeking. तो अभी भी मैं ये स्टेटस के बारे में ही बात कर रही हूँ. पहले 4 लाइन में मैंने स्टेटस को जस्टिस से अलग बताया था. लास्ट 4 लाइन्स ऑफ द सेम पैराग्राफ इज लिंकिंग स्टेटस विथ जस्टिस. ठीक है. Here again we see justice system is an inhibitor of action while status system is the motivator of the action. Inhibitor means stopping something, correct, and motivator for action means allowing them to do that. अगेन अ डिफरेंस. सो मैं कुछ ज़्यादा नहीं लिखने वाली हूँ, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आई विल टेक इट फर्दर. दिस इज RC नंबर 3. सिंपल लैंग्वेज, फर्स्ट पैराग्राफ आई विल टेक इट एज व्हाट? डिफरेंस एंड सिमिलैरिटी बिटवीन justice system and what was that? Justice and
Where did we go? Status system. That's all. Okay. बस इतना सा ही. That's all you need. Now let's move to the second paragraph. छोटा सा है. So if you want, you can merge it with the third paragraph, your choice. The status system has also evolved. Has also evolved means what? Can I infer that status के साथ साथ justice भी evolve हुआ है? Can I infer from this? Yes or no in the chat, please? Yes, because the word also. Okay. So the status system has also evolved so that the mayor will do dominance, takes on the more liable and subtle form of a will to be the best in the variety of culturally determined forms of excellence. Okay, thank you everyone for responding. Then moving further, we have evolved to have the capacity for sublimation and maturation. We owe to the system, status system, and not to the justice system. Oh, very strong line over here, huh? We owe to the system, status system, and not to the justice system, our cultural feats and our cultural dynamism. तो हम बार बार किसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बता रहे हैं यहाँ पे? स्टेटस को. ना आई हैव टोल्ड यू गाइज वन थिंग. तो जो लोग मेरे सेशंस को फॉलो कर रहे हैं, आई हैव स्ट्रिक्टली टोल्ड एवरीवन टू प्रैक्टिस आरसीज एज टाइम बेस्ड. ओके, सो टाइम बेस्ड टेस्ट की तरह जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो आरसी को, देन इज इट पॉसिबल दैट आप रुक कर डिक्शनरी रेफर करके वर्ड्स का मीनिंग निकालो? नहीं. सो इन दैट केस यू आर एक्सपेक्टेड to take a guess just like you will take a guess in the exam, and उतना ही guess करके उसका meaning समझना है उस word का जिसका meaning आपको नहीं पता. And when you are doing the analysis, at that time you can refer to the dictionary and get to note down the meaning of the words which you don't know. Third paragraph. Conspicuously absent from this picture of evolution of justice system is any reference to the evolution of altruistic emotions. क्या बिना जाने द मीनिंग ऑफ एल्ट्रूस्टिक मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर इस पैसेज को समझ सकती हूँ, इस पैराग्राफ को समझ सकती हूँ? ट्राई इट आउट, यू गाइस ट्राई इट आउट. कॉन्स्पिशियसली एब्सेंट, मैंने टिपिकली हार्ड पैराग्राफ लिया है आपके लिए, ठीक है, बिकॉज पहले दो पैराग्राफ्स काफी इजी थे. कॉन्स्पिशियसली एब्सेंट from this picture of evolution of justice system is any reference to the evolution of altruistic emotions and dispositions towards strangers. Is there a reference made here? Too many moralists wish evolutionary biology would reveal a trend to ever more inclusive, altruistic, ईगो इफेसिंग फीलिंग्स. आप बोल रहे हो कौन से लैंग्वेज में ये बात कर रहा है? अगर ये फीलिंग आ रही है तो बताना चैट में कि ये कौन सी फीलिंग में बात हो रहा है. हाय विशेष, वेलकम टू दिस सेशन. ओके, सो अगर आपको ऐसा लग रहा है, दैट्स नॉट द एंड ऑफ द गेम. दैट्स नॉट द एंड ऑफ द गेम. लेट मी टेल यू व्हाई. बिकॉज वी स्टिल विल गेट अ ऊपर का पिक्चर. ओके, कैसे ऊपर का पिक्चर निकालना है आगे और पढ़ते हैं. बट अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. ओके, बट. हाय विनय, वेलकम टू द सेशन. There's no such trend. Guys, we'll be starting with error detection after few minutes, just after we finish the RC. Okay, so but there's no such trend. Which not trend? A trend which will reveal about this ego facing feelings, which will connect it with the biology, but there is no such trend. Hi Amit, welcome to the session. So moving next, generosity towards needy strangers did evolve, but an alternative status game. So हम लोग, ये एक सिंपल लैंग्वेज है. जेनरॉसिटी यानी जेनरस बिहेवियर, अच्छा बिहेवियर, खुलकर देने वाला बिहेवियर टुवर्ड्स नीडी स्ट्रेंजर्स. जिन स्ट्रेंजर्स को हमारी ज़रूरत है उन्हें खुलकर हेल्प करना या उन्हें खुलकर चीज़ें देना, ये टेंडेंसी इवॉल्व तो हुई थी, but as an alternative status game. Now what is this? We'll understand it over here. It's useful to have them owe
you a favor. That means, you know, if you keep them in a kind of a favor wala situation, कि देखो मैंने आपको help किया था, that kind of a situation. In this more advanced forms, it's a negative reaction to the status system, a break on it and a subversion of it. How? Give all you have to the poor. If we are to solve mankind's impending problems, we cannot kid ourselves about the material with which we must work. Forget altruism. Say yes to human values, to status values. Now, guys, what is this paragraph at least telling you? मैं एक simple language में आपको दो options दे रही हूँ. Okay? Amit, I'll come to that. And Sonak, welcome to the session. Amit, ego effacing, I will not tell you the meaning of it. That's how we solve the RCs in the beginning. When I'll come to the question part, then I will tell you the meaning, because it's always expected that if you are planning to, you know, target the RCs, always solve the RCs as you are solving in an exam in a time based manner. तो जब आप टेस्ट की तरह दे रहे हो इस एग्जाम को, इस RC को, so you are expected to take a guess on the meaning of the word and figure out a meaning of the entire paragraph. Okay, so try that out. Uske baad I'll tell you the ego effacing meaning. So I'm giving you two options, everyone. Please focus. Option number 1 I am giving you, option A, that क्या इस paragraph का meaning है कि हमें, you know, generously लोगों को help करना चाहिए या लोगों को help नहीं करना चाहिए. Should we help? Should we not help? What do you guys think? A or B? What did you understand overall from this passage? I mean paragraph. This paragraph, third paragraph. Any idea? A. हमें करना चाहिए. Okay. Others, take up a big picture of this entire. See, every word is like very difficult over here, no doubt. Okay. But then we are more into understanding the bigger picture. मुझे chats नहीं आ रहे या? Okay, Gaurav, welcome to the session. Help. Prakash, Zishan, Ray, BM, Riddhi, welcome to the session. Help. Twinkle, welcome to the session. AA, सारे कह रहे हैं कि हमें help करना चाहिए. अच्छा ठीक है. अब मैं सिर्फ अमित को इस पीस पे help कर देती हूँ. Ego effacing क्या होता है? Effacing का मतलब anyone who knows the meaning of effacing? Effacing, facing, effacing. To make something disappear, किसी चीज को हटा देना, that is called as effacing. तो ईगो को साइड में रखना, ईगो effacing feelings, ठीक है, या समथिंग यू कैन नॉट फेस. वेरी गुड, इसलिए मैं फेसिंग को इतना ज्यादा स्ट्रेस कर रही थी. वेरी गुड. हाय साग्निक, वेलकम टू द सेशन. तो आपकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है दैट आपको यहाँ पर नो मैटर स्टेटस वैल्यूज के खातिर, एटलीस्ट अपने ह्यूमन वैल्यूज, अपने स्टेटस वैल्यूज के खातिर लोगों की, स्ट्रेंजर्स की हेल्प करनी चाहिए. सो आई विल जस्ट कीप हेल्प स्ट्रेंजर्स at least for status system. SS is status system. Okay, just for my understanding. Paragraph number 4, everyone. Quick now, everyone. I'll read the paragraph. You will tell me a bigger picture of the paragraph. कि मैंने पूरा paragraph पढ़ा. सोचो एकदम एक live situation लो. You are sitting in an office. So Prakash is sitting in an office and Twinkle comes in and reads out the full thing. Like she just gives a monologue जैसे कार्तिक आर्यन ने दिया था ना प्यार का पंचनामा में. So Twinkle came and without listening to anyone उसने पूरा सुना दिया प्रकाश को एक line से. ये paragraph number 4. प्रकाश ने उससे क्या समझा is the bigger picture. Okay, so let me take it like this so that you can read it with me. Some aspects of our ideology would elevate, increase the justice system over the status system. तो अब इस paragraph में हम कुछ examples देने की कोशिश करेंगे जिससे हम justice system को better दिखा पाए over status system. In effect, trying to switch the motivating power away from status to achieving moralistic character traits
if you can link it with the old paragraph, हमने कहा था कि कम से कम status value की खातिर आप किसी को help कर दो. So that is moralistic character traits, which by definition are not scarce, okay, in contrast to being a winner, which must be scarcer than being a player. Moralistic character traits are achievable by anyone, however untalented and industrious, as distinct from those excellences which require talent, interest, and industry. Too often, the rhetoric of the justice badmouth status as evil, seeking to undermine its influence on the young. यानी कि अभी भी देखो बिगर पिक्चर क्या है, बिगर पिक्चर है दैट मैंने पहले बोला था पैराग्राफ नंबर 2 में, अगर आप लोगों को याद है तो, कि स्टेटस सिस्टम इज ग्रेटर देन द जस्टिस सिस्टम. पैराग्राफ 4 में हम कॉन्स्टेंटली अब तक next, like for the further 5 lines we are constantly trying to prove what? Justice भी better है, justice better है. Okay, now come down. But the effect of the rhetoric on the young, to the extent is successful, is to kill their will to excellence. ठीक है, there is a debilitating disease. Debilitating is a new word maybe for some of you. So others who know the meaning of debilitating, please write it in the chat ताकि हमारी instant help हो जाए. Debilitating disease of the will called scrupulosity. ऑलरेडी ये वर्ड कोटेड है, इसका मीनिंग खोजने, सोचने और याद करने में आपको 5 seconds भी वेस्ट नहीं करने हैं, because it's already a quoted word. You don't need to think about it. It is caused by excessive exposure to moralizing. यानी आप जब बहुत ज़्यादा moral grounds पर सोचने लगते हो, that is the time when you start becoming scrupulosity or having scrupulosity. Okay, that's the thing. And now moralists may say that we should develop our talents, but they never admit the true reason why we should, namely that it paves the way to status. Does anyone seriously set as the main goal in life to be honest, reliable and conscientious? Of course not, right? And these can only be ancillary. All right. इतने बड़े पैराग्राफ्स, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एक पैराग्राफ इसमें से कम होगा रिद्धि. द एवरेज साइज रेंजेस फ्रॉम 300 to 500 वर्ड्स ओनली, जो कि इस पैसेज का भी साइज है. सो यस, ओके. The only difference is that more fact-based questions comes in CMAT than inference-based, और वो questions है. आज मैंने आप लोगों को questions नहीं read करवाया, ठीक है, क्योंकि हर दिन हम लोग अलग अलग approach करेंगे, जिससे जो easy लगे वो approach उठाए. Alright, okay everyone, focus back. So of course not, these are only ancillary. देखो अगर किसी को ancillary का मतलब नहीं पता है तो यहाँ best guess आप ये लगा सकते हो कि मैंने बोला कि किसी का main goal honest reliable नहीं होता है, तो main का opposite होगा ancillary, that means secondary. A person who succumbs to this aberration of moralistic rhetoric is a far more serious social ill than the people who are unjust in their pursuit of excellence. For this person lacks initiative, this good but aimless couch potato. Oh, yeah, providing support. Correct, Sagnik. Okay, Sagnik was saying erase, deliberating. Very good. Yeah. So, everyone, focus back. What's the overall picture? तो twinkle आई, twinkle ने ये सारी बातें किसे कही थी? मैंने बोला था प्रकाश को. So, प्रकाश, overall क्या समझा आपने इससे? You can say that Twinkle was trying to say that आपने जो second paragraph में बोला था, I am opposing it. I am saying that justice is also, you know, equally important or equal to status system, justice system. ठीक है, मैं इस point को counter करना चाहती हूँ. That is what Twinkle came and said. That's an overall picture you guys got, right? Now let's quickly come down to the 5th paragraph. The rhetoric also seeks to create sympathy for those who do not rise in the status along any path to excellence. Also, the word also means that आप अपना idea
कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो पैराग्राफ नंबर 4 से पैराग्राफ नंबर 5 पर। ये मैं आपको बहुत जेन्युइनली बताना चाहती हूँ। आई थिंक 500 600, I don't remember the number of RCs I've practiced, okay, and even now also I'm doing the cases. So after doing all of this na, these are the keywords which should strike your eyes immediately. But also तो आपको क्या होगा, तुरंत इंस्टिंक्ट मिल जाएगा कि इस पैराग्राफ में भी फोर्थ पैराग्राफ का कोई पॉइंट है। फोर्थ पैराग्राफ में अभी हमने ग्रेटर पिक्चर लिया दैट जस्टिस को हम इक्वल स्टैंड पे लाना चाहते हैं स्टेटस सिस्टम के। ऑल्सो मॉरलिज्म प्रमोट सोशलिज्म, येस ट्विंकल। सो हियर वी आर कंटिन्यूइंग द आइडिया इन सेइंग दैट जस्टिस को ऊपर ले जाने का एक और रीजन है कि जो लोग स्टेटस सिस्टम में कंफर्टेबल नहीं है, जिनके पास अच्छा स्टेटस नहीं है या जो स्टेटस में राइज नहीं कर पा रहे, उन लोगों के साथ सिंपैथी क्रिएट करने का काम जस्टिस करता है। हाय प्रतीक, वेलकम टू दिस सेशन। यस निखिल, अ लिटिल बिट, we are just about to complete the paragraph, I mean RC, but no worries, you will carry forward this thing towards the error detection part also। तो हम error detection का question अभी से I think 10 minutes 15 minutes में करने वाले हैं, 10 minutes में करने वाले हैं to be more precise। The rhetoric also seeks to create sympathy. We did it to the extent that the stigma is removed from being a loser from the start, a lazy drifter, and that too is a motivation killer. To have aimed high, tried and lost is much less of a stigma if it is one at all. Thus, this rhetoric is subversive of all that's outstanding and innovative in our society and puts no feasible human alternative value in its place. Instead, it's impossible to imagine any alternate way of life that could be as deeply fulfilling as a society that protects and promotes the status game. तो मैंने शुरू क्या किया था, मैंने फर्स्ट लाइन में ये बोला अपने फोर्थ पैराग्राफ के आइडिया को कैरी फॉरवर्ड करते हुए कि भैया देखो, हम उन लोगों के साथ सिंपथाइज करते हैं जो लोग इजीली स्टेटस में राइज नहीं कर पाते। बट फिर हमने एक रैशनल लिया। क्या थॉट प्रोसेस था हमारा कि अगर हम इस तरह से उन लोगों के साथ सिंपथाइज करने लगे जो अपने स्टेटस को राइज कराने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो ये तो गलत होगा ना। टेक इट एज अ सिंपल एग्जाम्पल, आप पढ़ नहीं रहे हो, आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए, मैं आपके साथ सिंपथाइज कर रही हूँ, चलो इट्स ओके दैट, चलो कोई बात नहीं, होता है, ट्राई अगेन नेक्स्ट टाइम। यहाँ तक का सिंपथी ओके था। बट अगर आप नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी हो गए हो और उसके बाद भी पढ़ नहीं रहे हो, यू आर स्टिल नॉट पुटिंग इन द एफर्ट्स एंड द टाइम रिक्वायर्ड एंड स्टिल रैंटिंग ओवर कि मुझे मॉक्स में अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट? यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। So even my empathy, sympathy over here will be of no practical use, right? आपको अपना, जब तक आपके पास एक मोटिवेशन ना हो कि मुझे अपना स्टेटस बढ़ाना है, तब तक आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स किसी फील्ड में नहीं डालोगे। That's the major takeaway of this paragraph. So first point you will write down, how I will make a note here is, I will say that first line linked with फोर्थ पैरा, ब्रैकेट में या डैश देकर आप सिंपैथी लिख सकते हो सो दैट आपको याद आ जाए। एंड देन रैशनल बिहाइंड सेकेंड पैरा। सेकेंड पैरा क्या था? स्टेटस इज ग्रेटर देन जस्टिस। डन? ओके, लेट्स मूव बैक टू द लास्ट पैराग्राफ ऑफ द डे नाउ। With the advent of mass media के आते ही क्या हुआ? Advertisers have joined the anti-status rhetoricians. They have discovered that an effective sales pitch is to associate their products with escape from the stress of status seeking. जैसे, I'll give you an example, but you read it over here. This strategy is more effective than associating a product with becoming successful. Think of Marlboro Man. The most effective TV ad campaigns, for example, those for Docker khaki slacks. What is the goal of this attack? The easy answer is enslavement. The natural selection favors enslavers
and the power to enslave has evolved in many species. In human species, enslavement occurs in many subtle forms, so subtle that the slaves do not even realize that they are slaves. Now, what say I don't know about Marlboro Man? You're clueless. You're clueless about who is Marlboro, who is this, what is this ad. तो आप सिर्फ ऊपर जाकर ये समझने की कोशिश करोगे कि किस पॉइंट पर वो फोकस कर रहे हैं. एंटी स्टेटस रेटोरिकन्स. फेयर एंड लवली, ओ जिसका नाम चेंज हो गया है, फेयर एंड नॉट फेयर, ग्लो एंड लवली, इफ आई एम राइट. करेक्ट गाइस, ग्लो एंड लवली. सो ग्लो एंड लवली, this cream always tries to show a negative side. Someone who is not fair, someone who is criticized by their family members or others. Yes, hi mutant, welcome to the session. So यहाँ पर they are trying to say कि जब से मास मीडिया आया है, उन्होंने सक्सेसफुल पिक्चर दिखाने की जगह उनका बेटर बिजनेस कब हो रहा है? देन व्हेन दे आर शोइंग द एंटी स्टेटस थिंग. दैट मीन्स दोज पीपल हु लेट्स से आर नॉट, देखो मेजर मेजॉरिटी क्या है? हैव यू सीन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का एड्स? what do? They show up the picture of one who got the favorite B school. Correct, no problem. ठीक है, ये तो बस, ये तो उनका एक हॉल ऑफ फेम है जो वो शो करते हैं. बट हॉल ऑफ फेम से बच्चे आते हैं? नहीं. बच्चे कोचिंग में कैसे आते हैं? जब आप उनको ये फोमो दो कि अरे जो नहीं करते ना क्लासेस, उनको नुकसान होता है, उनका कन्वर्जन नहीं होता, ABCD. ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, सिलेक्शन रेशियो देखकर ये तो एकदम बेकार सी थिंग है, टू बी वेरी ऑनेस्ट म्यूटेंट. ठीक है, आप टीचर्स के सैम्पल क्लासेस देख सकते हो, उससे डिसाइड करो, बिकॉज उनके कितने बच्चे IIMs में या फिर टॉप B स्कूल्स में गए हैं, उससे आपका कोई लेना देना नहीं. आपका लर्निंग एप्टीट्यूड कंप्लीटली अलग है. तो आपको सिर्फ और सिर्फ, मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ फैकल्टी के बेसिस पे ये डिसाइड करना चाहिए, अलॉन्ग विद द पैसे इन्वॉल्व, कि आपको उस इंस्टीट्यूट में पढ़ना है या उस कोचिंग में पढ़ना है या नहीं. ओके, हाँ, नहीं, नो प्रॉब्लम. आई एम नॉट रनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट म्यूटेंट, यू आर नॉट पेइंग मी अ सिंगल पेनी. ठीक है, तो जहाँ पैसा इन्वॉल्व नहीं है वहाँ कोई बात यहाँ नहीं आती. ठीक है, सो द लास्ट पैराग्राफ इज क्लियरली सेइंग कि जितना भी मास मीडिया का गेम होता है, everything is focused upon anti-social, या not social, anti-status mass media. ठीक है, यानी आपको हमेशा फोमो दिया जाएगा, आपको हमेशा ये रियलाइज कराया जाएगा कि I went from 55 percentile to 95 percentile. कैसे? क्यों? क्योंकि the majority audience is below 60 percentile in their mocks. ठीक है, so that is the reason why they target this. उनको तो पता है टॉपर जो हैं वो तो लास्ट में आएंगे और अपना टेस्ट सीरीज लेके चले जाएंगे, फिर हम इन्हें लास्ट में पैसे देंगे और हम उन्हें बोलेंगे कि आप ये बोल दो कि हम आपके फुल टाइम स्टूडेंट थे. That's a bad business happening all over. Okay, leave that. We'll talk about it later. So talking about the first question now, we have jotted down all the important points. अब आपका time है to answer. Give me your answer, then I'll tell you my argument for the correct answer. What? And we'll be fast, okay? Only 30 seconds for each question because we have to do error detection also. 30 minutes have already passed. What does the author think of generosity shown as to a needy stranger? ये हमने किया था. चलो quick. 30 seconds. Let me see what's the answers. Come on guys, be quick please. Waiting for your answers. Owe you a favor. कुछ याद है?
कुछ इससे याद आ रहा है, कुछ याद आने सा लग रहा है? हाय भागमत, वेलकम टू दिस सेशन। ए बहुत सारे ए आ रहे हैं। एल्ट्रूसिक के पीछे मत पड़ो। आई सेड दैट जेनरोसिटी हम नीडी स्ट्रेंजर को स्टेटस के लिए दिखाते हैं, स्टेटस वैल्यूज के लिए दिखाते हैं। एहसान, एग्जैक्टली प्रतीक, विच ऑप्शन इज टॉकिंग अबाउट एहसान? चलो, आई एम हैप्पी दैट यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। अब बस उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। रिधि सेज बी। Okay, guys, just translate it into English, guys. You are helping someone to keep them under the feeling of ihsan. Which option is talking about that? Come on, guys. Option B is revelation of natural instinct. This is nowhere the answer. Ihsan. In-depthness. Yes, Jishan. Absolutely right, Sagnik. As a ploy to keep the others indebted, the ihsan word which you guys were telling me. Absolutely now correct, Riddhi Shine. Question number 2 पे चलते हैं. The author decries the moralistic rhetoric because. Moralistic rhetoric, morality के बारे में. I think Twinkle told us back in the chat that ma'am also moralism promotes socialism. So उसकी point का कोई use कर सकते हैं. Very good, Riddhi. Question number 2. Moralistic rhetoric. Moral was status system. Rhetoric opposite of it. तो क्यों why not opposite? In the sense you can say why only moralistic? तो ऑथर को क्यों प्रॉब्लम है स्टेटस के ऑपोजिट जाने से? यानी स्टेटस का ऑपोजिट यानी जस्टिस सिस्टम. जस्टिस सिस्टम से क्यों प्रॉब्लम है? हमने 5th 6th पैराग्राफ में किया था. क्यों प्रॉब्लम है? जस्टिस सिस्टम से क्यों प्रॉब्लम है? वी डिड द एग्जाम्पल, रिमेंबर? आई टोल्ड कि अगर आप लोग अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हो एंड यू स्टार्ट क्राइंग कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया, आई विल सिंपथाइज विथ यू फॉर अ सर्टेन वाइल, बट देन इफ आई कंटिन्यू डूइंग इट, क्या प्रॉब्लम होगा? प्रतीक सेज ए. क्या प्रॉब्लम होगा अगर मैं कंटिन्यूसली आपको जस्टिस के मैटर पर या सिंपथी के मैटर पर लेके चलूं, ना कि मॉरलिस्टिक सोशल स्टेटस मैटर पे? जिशान ए. It kills the initiative. It's absolutely right. Why? मैंने क्या कहा था कि अगर constantly मैं आपके साथ sympathize करती रहूंगी, कोई बात नहीं, आप अगले बार ट्राई करना, पर आप अगले बार भी ना टाइम दे रहे हो ना एफर्ट्स दे रहे हो, तो आप ऑब्वियसली खराब परफॉर्म कर रहे हो. तो अगर आप किसी को इस मैटर पर और ज्यादा सिंपैथी दोगे तो इट विल किल देयर इनिशिएटिव टू गेट स्टार्टेड. Very nice. Question number 3. The author calls justice system as inhibitors of action. ये तो काफी easy है. Why is the author? It's just related to the second question we did, everyone. Just related to the second question we did. Try it out, please. Being inactive in portrayed as the virtue in justice system. It hinders the uninhibited dominance. There is no motivational factor ingrained in a justice system. No. देखो, this is a extreme sentence. हमने एक पैराग्राफ में बीच में डिस्कस किया था ना कि जस्टिस और सोशल थोड़ा बहुत इक्वल है. करेक्ट ट्विंकल? योर आंसर इज एब्सोल्युटली राइट. Try to convert it in one of the options. It hinders the free conclusion of agreements between people to reciprocate the favors. This is not related to justice system. It was related, favors वाली बात social system से related थी, justice system से नहीं. So I've already eliminated 2 options for you. 50-50, 10 seconds. First paragraph, anyone remembers? The author calls the justice system as inhibitor of action because so many A's. Khushi C is already out of the game.
being inactive is portrayed as virtue. Guys, यहाँ पर inference या assumption बोल सकते हो आप, not inference as such. I would rather call it assumption. मैंने आपको ये बोला कि if I keep sympathizing with a person who has not performed well, that might not instigate him to start a new initiative, right? But that is an assumption that he will be inactive and inactive को virtuous माना जा रहा है. कहीं पर भी इस पूरे पैराग्राफ में ये लिखा है कि inactive वाले लोगों को virtuous यानी अच्छा समझा जाता है? नहीं. No. But talk about this. Last line. Justice system is an inhibitor of action. Why? Why? Just go one step up. It has acquired the quite different roles of rule setter and umpire of the games of status seeking. Umpire, क्या करता है umpire? क्या करता है रूल सेटर? अगर मैं एक गेम बनाऊं एंड मैं जिशान, म्यूटेंट, खुशी, साग्निक, रिद्धि सबको मेरे साथ खेलने बोलूं, बट फिर गेम के रूल सारे मैं बनाऊं, तो डोमिनेंस शो कर रही हूं मैं अपना, मैं डोमिनेंट बिहेव कर रही हूं. मैंने गेम के लिए आप लोगों को इनवाइट किया, लेकिन गेम के रूल्स मैं बना रही हूं और गेम में मैं पार्टिसिपेट भी कर रही हूं. सो दिस इज माय आंसर. जस्टिस सिस्टम को इनहिबिटर ऑफ एक्शंस कहा जाता है क्योंकि वो किसी भी अनइनहिबिटेड डोमिनेंस को हिंडर करता है, रोकता है. वो क्या करता है? वो ये शो करना चाहता है कि जो भी हमने लाइक हम सिर्फ सही गलत देख रहे हैं और सही गलत का पर्सपेक्टिव हमेशा अलग होता है. सो दैट्स व्हाई दे इनहिबिट द behaviors. Okay, all right, moving to Marlboro Man. That's a fact based question, everyone. Quickly, 30 seconds. Marlboro Man is quoted in the article as what? Successful person, victim of something, symbol of protest, or a person flaunting status symbol. याद है मैंने आपको ग्लो एंड लवली का एग्जाम्पल दिया था in the same lines. Think and answer please. Guys, we are running out of time. Let's be quick, please. Quick answers. Pratik D, Zishan B. Okay. 10 seconds. मास मीडिया की बात कर रहे थे हम. मास मीडिया एंटी स्टेटस होती है. फ्रॉम माई पैराग्राफ यू कैन सी दिस. एंटी स्टेटस मास मीडिया. गॉट इट. क्विक वेरी क्विक. यस प्रतीक. बी और डी. ओके. प्रोटेस्ट अगेंस्ट द स्टेटस स्ट्रैटिफिकेशन. एंटी स्टेटस. देखो आप लोग बच्चे तो नहीं हो ना जो आप लोग को क्लास 10 या क्लास 8 के आरसी की तरह एक नॉर्मल रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देगा और जस्ट एग्जैक्ट सेम लाइन सेम वर्ड्स देगा. आपने एंटी स्टेटस पढ़ा था. प्रोटेस्ट अगेंस्ट स्टेटस इज द सेम आइडिया एंड सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. ट्विंकल गॉट इट. ऑल राइट. ओके. ये सक्सेस काफी ज्यादा नैरो हो जा रहा है ट्विंकल. यू शुड नॉट गो ओवर हियर. वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट सक्सेस का विक्टिम. इट कैन बी एनी पर्सन, एनी चीज का विक्टिम, कलर का विक्टिम, बॉडी वेट का विक्टिम, एनीथिंग लाइक दैट. ओके. नाउ सो दैट्स व्हाई स्ट्रैटिफिकेशन इज अ मोर जनरल टर्म. स्टेटस की स्ट्रैटिफिकेशन लाइक स्टेटस. ओके. Now question number 5 and the last question of RC, then we will move to error detection, everyone. With which of the following adages means old sayings, would the author be in agreement as inferred from the passage? तो passage से आपने क्या समझा? Failure is the stepping stone to success. Justice delayed is justice denied.
Honesty is the best policy. Nothing succeeds like success. हमने पूरे ओवरऑल पैसेज में ये बताना चाहा है कि स्टेटस सिस्टम इज ग्रेटर देन द जस्टिस सिस्टम. स्टेटस सिस्टम में हमने बार बार ये फोकस कराना चाहा है कि जो बंदा एम्बिशियस है, अपने स्टेटस को राइज करना चाहता है, वही होगा वो पर्सन जो कि इनिशिएट करेगा कामों को, मोटिवेटेड रहेगा अपना काम करने के लिए. Meaning I am focusing on what? Honesty has no picture here, Riddhi. हम तो सिर्फ जस्टिस और सोशल स्टेटस की बात कर रहे हैं, है ना. Honesty has no picture here. Try again everyone. Sagnik is focusing on success. Others, 5 seconds. 4, 3, 2, 1. Bhagmat, D. Okay, let's go with D. Nothing succeeds like success. मतलब मैं सक्सेस को पैरामाउंट बोल रही हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ. और सक्सेस को इंपॉर्टेंस देना यानी स्टेटस को इंपॉर्टेंस देना. ट्विंकल गौरव, आई हैव अ काउंटर फॉर यू. जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी यू आर फोकसिंग ऑन जस्टिस. अगर आप जस्टिस पे फोकस कर रहे हो तो आप किस बिहेवियर को सिंपथाइज कर रहे हो? रैंटिंग बिहेवियर को. वो लोग जो इनहिबिटर्स हैं, जो कभी इनिशिएट नहीं करते, उन लोगों को आप उठा रहे हो. दैट इज नॉट करेक्ट. ठीक है. फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन? नो. सो वी विल मूव एंड फोकस ऑन सक्सेस. गॉट इट एवरीवन? क्लियर? ऑल राइट, ऑसम. सो इसके साथ एक क्विक चेक कि अगर इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है पेज को तो फॉलो कर ले, आपको करंट अफेयर्स के अपडेट मिलेंगे. एंड कमिंग वीक मंडे ऑनवर्ड्स मैं कुछ वोकैबुलरी ओरिएंटेड भी ऐड करने वाली हूँ, जिनको सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखती हैं. वेरी गुड, करेक्ट. चलिए, लेट्स क्विकली फिनिश ऑफ द एरर डिटेक्शन नाउ. सो डोंट कंसिडर द एरर डिटेक्शन क्वेश्चन वन बाय वन. एक क्वेश्चन में आपको, आई विल शो यू, 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सो दिस इज ऑल टुगेदर 4 क्वेश्चंस विच यू आर सॉल्विंग टुगेदर. व्हाट यू हैव टू डू? रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली. करेक्ट निकालना है या इनकरेक्ट निकालना है? व्हाई डिड यू रिट्रैक्ट योर मैसेज प्रतीक? चलेगा, नथिंग इज गोइंग टू हैपन. यू आर गोइंग टू शो दिस चैट रिप्ले टू योर फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, एनीवन? नो. देन बाकी हमें किसकी कहाँ परवाह है. Alright, you have to identify the incorrect sentence over here. Incorrect sentence over here. 4 ऑप्शंस है आपके पास, आपको डिसाइड करना है कौन कौन से इनकरेक्ट है. एंड जो भी मुझे आंसर बताएंगे वो मुझे एक रीजन के साथ बताएंगे, रीजन वाई इट इज इनकरेक्ट. मैं बताऊंगी ना आपको आंसर, आपको मजा आ जाएगा इस क्वेश्चन का. लाइक इतना ग्रेवियस मिस्टेक है कि मैं क्या बताऊं, इतना डेंजरस मिस्टेक है कि मैं क्या बताऊं. ट्राई इट एवरीवन. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड. ऑप्शन ए, आई मीन सेंटेंस ए, प्लीज फोकस. Expectedly, we had to climb over bags and even gunny sacks to reach our seat. Everyone will tell me, कितने लोग हैं यहाँ पर? This is point number 1 which you should always focus. Plural singular. Plural singular. Expectedly we, plural, have to go and reach where? Riddhi, Pratik, Zishan, reach where? Seat or seats? R भी plural है. R, seat. मल्टीपल लोग हैं तो सीट्स भी मल्टीपल होनी चाहिए. ऑप्शन ए इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. Now, as a common person, like common in the sense like using your common sense, A has to be my answer.
So option B is out of the game. Option C is out of the game. Now, please understand, don't waste your time to figure out whether D is the wrong statement or not. Why? Why so? Because both option A and D has D. तो D तो definitely wrong है. And कोई मुझे बताएगा कि definitely wrong क्यों है? Anyone who can tell me that? If I would have been doing this live with you, I would have given you the lowest denomination note in my pocket right now to you. Younger आएगा? नहीं. एक बहुत खतरनाक मीनिंग में लाइक व्हाट शुड आई से गलती है. He was traveling to meet his deceased brother. How can you meet a person who is dead? Yes, Sagnik. Awesome. डिसीज्ड के प्लेस पर. अरे नहीं, तो आपको रिप्लेस नहीं करना, आपको डिसीज्ड में क्या प्रॉब्लम है वो बताना है खुशी. ठीक है. इन प्लेस ऑफ ऑफ इन ऑप्शन डी. नहीं 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 नहीं. जिशान, सी, डिसीज्ड ब्रदर इज समवन हु इज नो मोर एंड आप उसको मिलने जा रहे हो इज अ ब्लैटेंट मिस्टेक. ओके, सो ऑप्शन डी इज डेफिनेटली रॉन्ग. बट ऑप्शन बी चेक कर लेते हैं. डिस्पाइट. Oh, you're saying we will be having off here? No, despite does not have an off. In spite has. So, despite being crammed on an upper berth, a group of little children were cheerful. That's totally fine. Totally fine. Correct, Twinkle. So, the answer is option A. तो 4 questions हमने, 4 options हमने बहुत अच्छे से check किया. हमेशा याद रखना ये मेरा first condition है to check. कोई गलती है या नहीं है ये चेक करने के लिए मैं प्लूरल सिंगुलर सबसे पहले चेक करूंगी. सेकंड मेरा हमेशा आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ये इसी का पार्ट है, सबसेट है. ऑलराइट, नंबर 2. अगेन यू हैव टू फाइंड आउट इनकरेक्ट और करेक्ट स्टेटमेंट्स. इनकरेक्ट. A. Okay. Very nice. So, according to these people, B and C is the wrong, incorrect sentence. Let's read. The recent media onslaught destroyed would have unnerved any youngster. No problem. All good. Okay? So, all good means option B and option D is out. Now, we'll read option B, which is definitely wrong. But Sumita is made of stern stuff is wrong. C. Made of sterner stuff is a idiom. It's an idiom. Okay. That means that you are very strong character in handling problems. So, that is the correct sentence. Sterner hona chahiye. Okay. Okay, ma'am, bye. I have another class. Yeah, sure, Riddhi. Bye-bye. Take care. And tomorrow, guys, we are not having a class at 10. Okay, just a quick reminder. I'll have a buffer class on Sunday at 10. Okay. All right. So, moving forward to the next sentence, that is option C. Whatever happened, happened is past tense, hasn't affected her at all. Hasn't affected her at all. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. क्या ये बात सही है? नहीं, नहीं. सो whatever has happened has not affected her would be a correct combination. Thank you so much, Riddhi. All right, option A is the right answer. Chalo, now this is oh, I'm so sorry. I think my good notes stopped. Just a second. I think it's back.
back on track. Yes. All right, let's go back to our next question, everyone. So here comes the third question for the day. Incorrect statement again. Clothes need not be very expensive. Is there a problem with this statement? Correct. A simple and sober dress too adds to one's personality with an apostrophe after S. Is this correct? This is a punctuation error. जब भी आप S के बाद apostrophe देते हो, that depicts plural. जैसे teachers association. ठीक है? But one is singular. So you need to write one's personality. That's another type of an error. Very good, Sagnik. That is a punctuation error. So option B is definitely my answer. Option D is out. Okay. Now we'll check C and D and we'll get our answer. Okay. That's easy. Now, let's check the next sentence. A particular dress may suit one person but not the other. Any problem in this? The other can be used if we are referring to someone specific. It is a general reference. So what we will keep here in place of other? Another. A particular dress may suit one person but not another. Another is the perfect replacement for the other. The other, आपको अगर ये रूल नहीं पता था तो प्लीज नोट कर लो that the other is used when उससे पहले वाला एक specific example है. यहाँ पर हम one person की बात कर रहे हैं. वो one person कोई भी हो सकता है. Okay, but if I say that, sir, it suits me but not the other, then it's okay. But if it suits one person but not another. Very good, Gaurav. It should be B. Now, everyone will pay attention and tell me the answer of this question. Here you have to find out inappropriate or appropriate. Select the option which is correct. Surviving and thriving in a turbulent environment calls for a particular skill set, one that is not taught in university courses. You have to identify the correct statement. Do you think this is correct statement? Yes, of course. So this is correct. A is definitely one of the correct answers. Option B is out of the game. Now let's check another statement. These skills are more than certain philosophical bent or a quirk of personality. Philosophical bent, a quirk of personality. Are they matching? B is not an answer. Oh, anyways, B was not the answer. Why did I even, tried it? Let's try another question. They are actual methods, tools, way of seeing the work in turbulent environment. Is it correct? Is it correct? No. यहाँ पर they are actual methods, way of seeing that the work in the turbulent environment. Now last but not the least. So see, this option is also gone. Now we'll check D. अगर D correct होता है तो very good, otherwise gone. They are the skills of the surfer and the martial artist, the skill of playing saucer rather than baseball. Do you think there's something wrong here? I don't think so. And therefore option
D will also be the correct answer. C is the right answer, everyone. Please make a note. A and D. Okay. Second last question for the day for everyone. Second last question for the day for everyone. Yes, Twinkle. That is also one of, no, not the option D one in this case, Twinkle. These, of course, these के बाद they are taken a pause and it's of course fine. Why? Because of course के आगे and पीछे दोनों comma होता है. All right. Oh, you are talking about the last one? Okay. So here, they are the skills of the surfer and the martial artist. Stop. Okay, that's fine. That's correct. No problem in that, Twinkle. Okay. Let's move to the second last question, everyone. Please focus. The UN considers itself above the law of mere nations and it answers to no one. अगर ये गलत है तो क्यों गलत है? Article, the law. The UN considers itself above law, nahi, above the law. It does not sound correct also. Option B, there is no vote on UN leaders other than by the culprits themselves and there is no international referendum on its policies. Any mistake you find here? No. एक बात हमेशा याद रखना, try to find out what is correct in them. Because आप अगर ज़बरदस्ती mistakes निकालने की कोशिश करोगे, you will always land up onto something which is really not an error. So the best approach is to find out whether it is correct or not. The UN sets its own standard of conduct and it controls its own judge and jury. What is the mistake here? I am helping you. What's the mistake here? Plural form में mistake है. Can you identify which word? Plural form होना चाहिए. किस word का? ये correct लगा? Standards. Very good, Sagnik. We have standards, not standard. Standards of conduct. Plural. So that's not correct. प्लीज मेक अ नोट प्रतीक. आप ये सब याद रखना. वर्बल जो है ना, वर्बल एबिलिटी, उसको प्लीज पिन पॉइंटेड वे में याद करने की कोशिश मत करो. Verbal is what you learn in the process. So maintain a error log as I have told in one of the videos earlier and write down what you went wrong in or what you learned from this question so that you can refer to it after every week and can revise the concepts you learned in verbal. अगर आप ये सोचकर बैठोगे ना कि मैं verbal का एक एक rule पढ़ के question solve करूँगा तो it would not be very effective. Last but not the least, these of course are the very reasons why many have opposed the US membership. बिल्कुल सही जवाब. Option D is the right answer, everyone. B and D is the correct answer. Now this brings me to the last question for the day. How was the session, everyone? We have passed 1 hour, which should not be the case actually. तो कोई बात नहीं, हम लोग एक्सटेंड करना मेरे लिए फाइन है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ठीक है. सो टुमारो, जस्ट अ क्विक रिमाइंडर, वी विल नॉट बी हैविंग अ सेशन एट 10. we'll have a buffer session on Sunday. Okay, rather we'll have a session on Sunday. All right then, thank you so much everyone for joining in. I hope this was an informative session for all of you. The ones who are watching the session on the recorded format, please do like the video and also comment below and let me know how was the video. And the most important thing which I want for all of you to do is to share this video with more and more people so that more people come to know about CrackZat, okay? And if you're new to the channel, do subscribe to the channel as well. Thank you so much, Zishan. Thank you, Sagnik. See you in the next session. That would be on Saturday, okay? Bye-bye. Take care, everyone. Good night. Thanks, Bhagmat. Take care. Bye-bye.